All right. So, see, a rainbow is only visible when the sun is located opposite to it. ठीक है? The sun has to be on the opposite side of the rainbow in order for the rainbow to be visible. That is number one thing. Then, when the sun is vertically overhead, no rainbow will be visible. ठीक है? If the sun is vertically overhead, no rainbow will be visible. It has to be located opposite of the rainbow. Then a stick dipped in the water in slanting position observed sideways appears shorter in length and bent at the surface of the water, and this happens due to refraction of light. ठीक है, तो अगर कोई लकड़ी की छड़ी है उसको तुम वाटर में डाल दो, तो जहाँ पे वो कांटेक्ट बना रही होगी सरफेस ऑफ द वाटर से, वहाँ पे उसकी लेंथ छोटी दिखाई पड़ेगी कंपेयर टू इट्स एक्चुअल लेंथ, एंड that occurs due to refraction of light. Okay, that occurs due to refraction of light. So that occurs due to refraction of light. Then we have an air bubble within water. An air bubble within water an air bubble within water acts as a concave lens, okay, or divergent lens. So another name that you can remember for concave lens is the divergent lens. Another name is another name for the concave lens is divergent lens, and for this reason searchlights, car headlights employ the divergent concave lens. So far we have discovered that it's the concave lens that has more utility compared to the convex lens. In dentistry applications we use concave lens to treat myopia. Not treat myopia, but it forms upright and magnified image, and owing to that property of concave lens we use it in the dentistry applications. Then in case of owing to its divergent properties of the concave lens is used in the searchlights or even the car headlights. They employ the divergent concave lens, but so far the reading glass is concerned, that employs the use of convex lens. Okay, so it is you can remember it, reading is like a personal exercise. Okay, so that employs the use of convex lens. Okay, now the air bubble within water, that also acts as a concave lens or a divergent lens, and for this reason searchlight, car headlights employ divergent concave lens. Now when a person enters into a dark room from well lit area, he is not able to see clearly for some time, and later he gradually begins to see things because of bleaching. And so the phenomenon that occurs, first of all, remember, it is called bleaching. And what happens actually during bleaching is that there is a reformation of roads, the dimension and the shapes of the road cells. There is a reformation of roads. So cones are for colored vision, and that usually accompany with well lit conditions. Roads let us see in the dark. So suddenly if you enter a dark room, the eye has to kind of quickly transition from the use of the active cone cells to the active road cells, which actually enable us to see in the dark. So that is why it takes a little bit. So when a person enters into a dark room suddenly from a well lit area, he is not able to see clearly for a while. Now the least distance for distinct vision in normal eye, that is 25 centimeter, least distance for distinct vision. And the change of focal length of an eye lens is caused by the action which is done in the ciliary muscles. So जैसे हम लोग फोकसिंग करते हैं लेंस में, कैमरा में लेंस लगाए और मैनुअल फोकस करते हैं बाय रोटेटिंग द रिंग, द सिमिलर sort of a function is operated by which part of our eye? I think that is ciliary muscles. Okay, now the power of lens is measured by diopter, and the formula is 1 upon focal length in meters. So that gives us the unit or the power of lens, that is diopter. Now exposure value in camera, that is EV, which actually denotes the amount of light intensity and entering the lens into the lens. So that is aperture square divided by the shutter speed. So that gives us the EV value. Now this is something that many few people or only photographic enthusiasts might know. So you have to square the aperture and divide that by the shutter speed. All right, so square the aperture, divide that by the shutter speed, and you get the exposure value. Okay, then I'm telling again, aperture square divided by the aperture square divided by the shutter speed, and that gives us the exposure value or EV. Now retina is comparable to the film part of traditional camera, like the film or the sensor, we can say, in the modern cameras. In case of traditional cameras, the imprinting process is finally done on the
film that is actually positioned backwards, right? And in case of modern cameras, it is the sensor on which everything falls upon and then imprints there, and it is recorded there. So it in terms of modern cameras, it's the sensor which behaves like retina, and in case of traditional cameras, it's the film which behaves like a retina. Now, in order to see full image of a person of height h, the mirror should be of height at least h. What is that? In order to see full image of a person of height h, the mirror should be of height of at least h divided by, I think I missed there something. In order to see full image of a person of height h, so in order to see a person of should be at least what? So to see to see full image of a person of height h, the minimum height of the mirror should be half the person's height. So h by 2 or h by 2. This is because the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, so we can write over here. I have mistyped. So let's first of all put a 2 there, and then let's write the reason for that. The reason is that we need a mirror of. So this is the reason. Okay, this is the reason why we need a mirror of h by 2 length. Moving on, radius of curvature of a plane mirror, that is infinity. And sun's rays take about 8.5 minutes to reach Earth. And when light waves travel from air to glass, so glass is a denser medium, its frequency remains constant while other parameters changes. When light moves from denser to rarer medium, it speeds up and bends away from the normal course. Okay, that I know. So but glass is a denser medium, right? So when light waves travel from air to glass, its frequency remains constant while the other parameters change. Or if we were to kind of generalize that statement, let's ask if rarer to denser does the. So the AI has to say that no, the frequency of light waves do not change when the ray travels from a rarer to denser medium, and this is because the frequency is an inherent property of light. Okay, when light travels from a rarer to denser medium, the following changes occur. So its wavelength changes. The wavelength of the light wave decreases. Wavelength is like the wavelength decreases. That means and the speed of the light wave decreases. Okay, this phenomenon is called refraction, which occurs when a wave enters a medium with different density. All right, so we can write like, I know that this phenomenon is called a refraction. I'll note it down here, that the frequency is an inherent property of light wave which doesn't change upon changing the medium, right? So what changes is the wavelength, right? So what changes is the wavelength. So I've noted that down as well. Let's reread that. So sun's rays take about 8.5 minutes to reach Earth. When light waves travel from air to glass, that's from a rarer medium to denser medium, the frequency remains constant while other parameters change. So when light moves from denser to rarer medium, it speeds up and bends away from the normal course. The formation of glittering colors in soap film, that is the result of total internal reflection, plus there's another phenomenon at play over here that's called interference. So not only total internal reflection but also interference, and that is why we see glittering colors coming out of the soap film, right? So now let's try to find out what do you mean by interference. So what is interference of light? Is phenomenon that occurs when multiple light waves interact with each other, causing the combined amplitude of the waves to increase or decrease. Okay, how does it happen? So here are some things to know about interference of lights. When it happens, when two or more light rays with the same frequency, wavelength and amplitude collide in a medium, what it creates, a new wave with a larger, smaller or the same amplitude as the original waves. When it's constructive, when two light waves form a superimposed wave with a higher amplitude. Examples: the light reflected from oil coating on water, or the colors reflected by soap bubbles when shined by a light source. So it was discovered by Thomas Young, discovered the phenomenon of light interference in 1801. So you should remember this line, first of all, that it was discovered by Thomas Young in the year 1801. We'll copy that. And the other example that we see, why are we able to see like oil droplets floating on the surface of tea, for instance, or even milk? We see that distinctly enough, and that is possible because of interference of light, right?
that is only possible due to interference of light. So first of all, I'll write who discovered this phenomenon. Discovered by Thomas Young. And another example of interference is oil droplet on milk surface. So that is another example of interference. All right, that is another example of interference. Although this phenomenon that is written over here, that different colors of light coming out of the soap film, that is not only due to interference but also total internal reflection. Now, total internal reflection occurs when a ray of light travels from a denser to rarer medium, such as diamond to glass, when angle of incidence is more than the critical angle. The diamond has a high refractive index, which is 2.42, and therefore it shows total internal reflection. So is it safe to assume that substances with higher total refractive index, substances with high, is there a correlation such as this? Yes. So substances with high refractive index are more likely to exhibit total internal reflection. That is what I was saying. Okay. All right. Then moving on. So there are quite many minute points to remember here, that when the angle of incidence is more than the critical angle, that then total internal reflection occurs, and that happens. We just now read about how we are able to see different colors coming out of the soap film bubble, and how total internal reflection occurs in diamond, which actually has a very high refractive index. And another example of interference is that we are able to distinctly see the oil droplet floating above the surface of the milk. And the condition for the rainbow to be visible is that the sun has to be opposite of the rainbow. If it is vertically above the rainbow, then we are not able to see the rainbow. Now, soap film, then diamond, and this optical fiber communication, that is in short OFC, and mirage formation in desert areas, and endoscopy, which is a technique for medical treatment. So these are all based on the total internal reflection of light. Total internal reflection of the light. In optical fiber communication, power consumption is very low, free from radio wave interference. In India, Sterlite Technology Company started manufacturing optical fiber cables in the year 2000. Mirage is formed mainly due to two factors: terrestrial heating and refraction of light. So there are actually two preconditions to the formation of mirages. There should be a heated up surface, that is terrestrial heating, and then what follows is the refraction of light. So both these conditions are necessary. You must remember the name of this company, which started the manufacturing of optical fiber cables in as early as year 2000. Now, so couple of things that I've already mentioned here is that we are able to see different colors coming out of the soap film. That is one. Then we are able to. Then the other one is the other one was, I guess, different colors. And then we read about diamond. Then couple of more points you should remember is mirage formation in the deserts, and this procedure of endoscopy, that also, and the optical fiber communication. These are all employing a technique called total internal reflection. And total internal reflection is a phenomenon that also occurs in the mirage formation, and but there are a couple of preconditions to that the terrestrial heating should be there, and refraction of light to hona hi chahiye. Then gamma rays have the shortest wavelengths. And radio waves have the longest. Okay, so radio waves have the longest wavelength, and gamma rays have the shortest wavelength. Now the one which have short wavelength, I think they are more harmful. So 5550 angstrom, or we can say that is equal to 555 nanometer. Eye is most sensitive to yellow and green lights. I think these two colors fall within this range, green and yellow, or you can say yellow and green. Okay, let me just ask AI, are waves with, so yes, waves with shorter wavelengths can be more harmful than the waves with longer wavelengths. So ultraviolet radiation, we have a short wavelength UV radiation. Then gamma rays, these have the shortest wavelengths and the highest frequency of any type of radiation. They are among the most dangerous to humans because they can penetrate the skin and harm cells. Electromagnetic waves, again, they have very short wavelength, have more energy than those with the longer wavelengths. Waves with more energy or frequency can penetrate the body tissue and harm it.
Okay, so yes, that is true that the waves with shorter wavelength are more harmful. The other thing was this 5550, 5550 angstrom. You can also write that as 555 nanometers. 555 nanometers, okay. So this is where the green or yellow light actually lies on the spectrum. Then what is raster scan? The image is generated by focusing an electronic beam on the phosphorus coated screen. So that is called as raster scan. So it employs the use of phosphorus coated screen. Okay, phosphorus coated screen. The image is generated by focusing an electronic beam. The image is generated by focusing an electronic beam. Focusing an electronic beam on phosphorus coated screen. Okay, so we are able to see certain unique images by focusing electronic beam on phosphorus coated screen. That is called a raster scan. Then Raman effect, that is a change in wavelength of light by passing through different molecules. It is applicable on all transparent medium. Change in the wavelength of light by passing through different molecules. अभी मैंने ऊपर बताया था कि frequency नहीं change होती है. It is the wavelength that changes if light moves in different mediums with different densities. फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, वेवलेंथ बदलती है. तो वेवलेंथ बदलने के कारण फिर और क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, दैट वो रमन ने समझाया था. तो दैट इज़ कॉल्ड एज रमन इफेक्ट. लेट इस आस्क एआई व्हाट इज़ रमन इफेक्ट. एन ऑप्टिकल phenomenon that occurs when light interacts with matter, causing the light to scatter. Okay, so it's more related to scattering. The effect is characterized by a change in the wavelength of light, which is caused by the vibrational modes of the chemical bonds in the material being examined. Here are some things to know about the Raman effect. So it was discovered in 1928. Raman scattering is also known as Raman scattering, which is a specific type of light scattering that's part of the Raman effect. The Raman effect can provide information about a material's molecular structure. This is the most important point. Chemical bonds and vibrational dynamics. So by the Raman effect, we are able to understand material's molecular structure and the bonds which are within that molecule. And what about this Rayleigh scattering? The Raman effect is based on light scattering, which also includes Rayleigh scattering, an elastic scattering that occurs at the same wavelength as the incident beam. The Rayleigh scattering is about 1,000,000 times more intense than Raman scattering. So I will write that Rayleigh scattering when wavelength अगर same रहती है, अगर wavelength same है. So the Raman effect is based on light scattering, which also includes Rayleigh scattering, an elastic scattering that occurs at the same wavelength as the incident beam. अच्छा, तो अगर इंसिडेंट बीम से की वेवलेंथ के सेम वेवलेंथ की स्कैटर्ड लाइट भी अगर होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेले स्कैटरिंग. इट इज़ मोर इंटेंस दैन द रमन स्कैटरिंग. तो एक तो ये पॉइंट याद करना है. दूसरी चीज़ है कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह, इससे हम स्टडी कर सकते हैं. तो इसको यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई. और दूसरी चीज़ है कि यहाँ द रमन इफेक्ट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, मूविंग ऑन. सो रोस्टर स्कैन हो गया, रमन इफेक्ट हो गया, 1928 में डिस्कवर हुआ था. सो बेसिकली स्कैटरिंग इज़ द थिंग दैट ही एक्सप्लेन. देन रेडियो वेव्स मैंने बताया सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसकी. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स. To detect overspeeding, police use Doppler effect of reflected radio waves. To detect overspeeding vehicles, police uses Doppler effect of reflected radio waves. तो ये एक याद करने वाले पॉइंट हो गया. So radio waves are produced by rapidly oscillating electric currents. ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि how are radio waves produced. तो ये याद कर लो कि they are produced by rapidly oscillating electric currents. So oscillating, अगर electric current oscillate करेगा, ऑसिलेट करने का मेरे ख्याल से मतलब है कि कभी एसी जो फेज़ होता है अगर वो आइसोलेट करेगा बहुत फ्रीक्वेंटली तो अब मेरे ख्याल से रेडियो वेव बन जाएगी. और उसी के रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके हम लोग डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. डॉपलर इफेक्ट यूजिंग द रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड बाय द पुलिस टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स. नाउ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना परसिस्ट्स फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड. अभी हमने देखा था ऊपर हमको ये क्या था, कुछ तो पढ़ा था ऊपर हमने, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. वेयर एज इमेज टू परसिस्ट के लिए 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक हमको देखना होता है उसको. नाउ द इमेज फॉर्म्ड इज़ ऑन रेटिना इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. तो हम लोग रेटिना पे जो देखते हैं वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है दैन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. ह्यूमन्स
ये कितनी अनोखी बात है कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल तो होगा, इन्वर्टेड भी होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. ह्यूमन stereoscopic vision helps in the brain to combine the two images and build a 3D picture of object where we can judge the depth, distance of the object. तो stereoscopic vision होती है हमारी humans की. Then direct viewing of the total solar eclipse exposes the eyes to UV radiations, that is, I know. The color of the star indicates its age and temperature, as blue star is equal to young, high temperature, whereas red star is old and cooler star. Okay, so I had to take a break. Then यहाँ तक हमने देख लिया था कि रेटिना में जो हम लोग ह्यूमंस की विजन देखते हैं वो रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. 3D पिक्चर हम लोग बनाते हैं क्योंकि स्टीरियोस्कोपिक विजन होती है. और रेटिना पे इमेज परसिस्ट होने के लिए, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह दिमाग को करने के लिए 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए परसिस्ट करनी चाहिए. नाउ डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स एक्सपोजेस द आइज टू UV रेडिएशंस विच आर हार्मफुल. उसके बाद द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स एज एज वेल एज टेम्परेचर. तो अगर कलर अगर ब्लू होगा तो इसका मतलब कि वो यंग है और उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. अगर कलर तारे का कलर, स्टार का कलर अगर ब्लू है, दैट मीन्स इट्स यंग एंड इट इज़ क्वाइट हॉट, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर. वेराज अगर रेड स्टार है, रेड स्टार मतलब वो अब टेम्परेचर उसका उतना नहीं रहा, कूल डाउन हो गया है और ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड स्टार है. इसके बाद डिफ्यूजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज़ ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से स्कैटरिंग हो जाती है. और स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ. मतलब अगर तुम विबग्योर में देखोगे VIBGYOR, तो उसमें जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा. तो कम वेवलेंथ वाली गामा रेज होती हैं सबसे कम, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है. वेयर एज डिस्पर्सल इज ब्रेकिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है. तो ये तो मुझे पता था. द कलर ऑफ लाइट इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स वेवलेंथ. सो VIBGYOR इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ्स. सो दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ्स. अभी मैंने ऊपर बताया था कि वेवलेंथ और स्कैटरिंग में इन्वर्स रिलेशन है. तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसमें स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है. तो दैट इज़ वाई वायलेट इज़ द मोस्ट स्कैटर्ड, वेयर एज रेड लाइट इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है तो इसमें स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है, तो एनर्जी भी सबसे कम होगी. तो स्कैटरिंग कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, या ऐसा कह सकते हो एनर्जी कम है इसकी वजह से स्कैटरिंग भी कम हो रही है, ठीक है. तो एनर्जी भी इन्वर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ के, ठीक है. तो रेड लाइट और वायलेट लाइट में किसके पास ज़्यादा वेवलेंथ है? वायलेट के पास सबसे कम वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम है, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है. सो अब देखो, ये जो रेड लाइट हमने बताई आपको, उसकी जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग और सबसे कम होगी, लीस्ट स्कैटर्ड. उसकी एनर्जी भी सबसे कम है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नलिंग लाइट इन ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग बहुत कम होती है. देन रिलेटिवली ब्लू लाइट जो कहीं बीच में आती है उसकी भी हम कह सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है. दैट इज़ स्ट्रांगली स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स. अब वायलेट के मुकाबले तो ज़्यादा स्कैटर होगा है ब्लू लाइट, ठीक है. तो एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, एंड हेंस स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू. देन सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग. अब अगर सूरज की बात करें तो सूरज जो है बिल्कुल ही क्रिम्जन रेड दिखाई पड़ता है सनराइज़ में और सनसेट के समय भी. सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग अवे ऑफ द अदर कलर्स एंड लीस्ट स्कैटर्ड. मतलब जो बाकी कलर्स होते हैं वाइट लाइट के VIBGYOR में से रेड हटा के बाकी जो वो तो स्कैटर ज़्यादा हो जाएंगे ना, बिकॉज जिसकी VIBGY वगैरह की तो कम वेवलेंथ होती है तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी, वो इधर उधर चली जाएंगी. तो कौन सी स्कैटर नहीं हो पाएगी तुम्हारी आँख तक पहुँचने तक? सबसे कम स्कैटरिंग रेड में होगी, इसीलिए वो तुम्हें बिल्कुल प्योर रेड फॉर्म में दिखता है सनराइज़ और सनसेट के समय. सो दैट इज़ अ फिनोमिनन ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो सन एंड मून अपीयर एलिप्टिकल नियर होराइजन. ये एलिप्टिकल दिखना दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन. देखो शेप में अगर चेंजेस आते हैं तो दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे कलर वगैरह में थोड़ा ऑल्ट्रेशन होता है तो फिर दैट इज़ अ फिनोमिनन ड्यू टू स्कैटरिंग. खैर, अब एलिप्टिकल दिखता है तो नियर द होराइजन, सो दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सन इज़ विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर द सनराइज एंड सनसेट, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है.
तो sun is visible to us few minutes before the sunrise and sunset. That is due to refraction of light. You can ask that. So it's due to refraction or not? Let's ask. So it is because of atmospheric refraction. When the sun is slightly below the horizon, the light coming from it travels from less dense to more dense air and it is refracted downwards. Thus the sun appears to be raised and can be seen 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. So that is a phenomenon due to refraction of light. And it also appears elliptical near the horizon. That is also due to refraction of light. But it appears crimson red. That is due to scattering of light, right? और रेनबो में क्या होता है? रेनबो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? उसमें तो डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है. एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई एज ब्लैक. द ग्रास अपीयर्स ग्रीन इन कलर because it absorbs all the other colors except green which is reflected. तो ये भी सही बात है. एस्ट्रोनॉट को आउटर स्पेस में सब कुछ स्काई ब्लैक दिखता है, हमको ब्लू दिखता है क्योंकि हमने बता दिया VIBGYOR में B की वेवलेंथ कम होती है इसलिए स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लू दिखता है, ठीक है. और वैसे एस्ट्रोनॉट को ब्लैक दिखेगा. द पॉइंट इज़ कि वहाँ समुद्र नहीं है इसलिए ब्लैक दिखेगा. फिर घास की बात करें तो घास भी जो है ग्रीन तो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सबको इधर उधर नहीं, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है. सो द ग्रास अपीयर्स ग्रीन इन कलर बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स ऑल द अदर कलर्स. इट अब्जॉर्ब्स ऑल द अदर कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन विच इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट. 1942 में ये आया था. लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज वर शिफ्टेड टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, that is long wavelength side. This is called redshift. So farther moving body appears to shift colors towards red in the Vibgyor spectrum. ठीक है. So the concept of expanding universe is based on the Doppler effect and this is 1942. बाकी जो रेड शिफ्ट ऑफ कलर मैंने बताया वो इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं. सो बहुत ही लार्ज गैलेक्टिक बॉडीज़ अगर फार्दर अवे जा रही है हमसे तो दैट इज़ इमिटेटिंग एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. तो बिल्कुल एक्सट्रीम farther objects हमेशा red appear होते हैं and this indicates that the universe is expanding and this is nothing but the Doppler effect discovered in 1942. तो farther moving bodies are emitting colors which shift towards the red end of the visible spectrum and coming closer bodies appear towards the violet end. ठीक है. तो इसीलिए रेड शिफ्ट बोलते हैं. दूर जाती हुई बॉडी को का कलर रेड की तरफ शिफ्ट होने लगता है. दैट इज़ ज़्यादा वेवलेंथ वाली तरफ. एक सेकेंड. रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लो वेवलेंथ साइड. एक सेकेंड. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट 1942. रेड शिफ्ट तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है. तो फॉर ऑल मेडिकल पर्पसेस डेंटिस्ट्री शेविंग सर्च लाइट्स एक्सेट्रा ये सब कॉनकेव में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जबकि कार के रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स इस्तेमाल होता है. पर्सनल रीडिंग ग्लासेस के में कॉन्वेक्स इस्तेमाल होता है. कार के रियर व्यू में कॉन्वेक्स इस्तेमाल होता है. देन स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये तो हम बता ही चुके हैं. स्कैटरिंग मीन्स डिविएशंस. देन टीवी सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एज द अर्थ इज कर्व्ड. ठीक है. अर्थ इज कर्व्ड तो टीवी सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड. ये याद कर लो. देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो इन टीवी सिग्नल्स while amplitude modulation for video transmissions. तो ये सब क्या है? ऐसे 265 RE 294 G8 330. सो मेरे ख्याल से ये 7 फ्रीक्वेंसीज़ हैं सारे गामा पाधा नी की. तो इसको हम देखते हैं अगले वीडियो से. रट लेना अच्छा है बिकॉज अब हमारा म्यूज़िकल इंक्लिनेशन भी है इसलिए हम इसको रट लेंगे. बट ये एक लास्ट पॉइंट है कि ऑडियो ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज़ यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड इन टीवी सिग्नल्स. अच्छा तो टीवी बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है ना ऑडियो वीडियो का. तो उसमें कैसे आता है सिग्नल्स? डिफरेंट ऑडियो डिफरेंट होता है, वीडियो डिफरेंट होता है. तो ऑडियो सिग्नल्स आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की मदद से और वीडियो आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वजह से. इतना रट लो. वाइल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर वीडियो ट्रांसमिशन. अब इसके बाद ये सारे गामा पाधा नहीं और ये रिवर्बरेशन वगैरह हम देखते हैं अगले वीडियो से.